लास्ट टाइम मैंने चालू किया था लंग का डेवलपमेंट आपको बताने को, और मैं कहीं तो भरकट गया था, वहाँ से भटक गया मैं. आई कुड कंप्लीट इट. युधिष्ठिर किधर है? तेरा नंबर है आज, नोट्स ले लें. हाँ, ये देखो ना कैसे देख रहे हो. तेरे वर्ड सर्च में लिखो भरकट. सो लैरिंगोट्रैकियल ग्रूव, हमने बोला कि ऐसा ऐसा फॉर्म होता है. वो लैरिंगोट्रैकियल ग्रूव साइड से देखोगे तो ऐसे आता है, आगे से देखोगे तो लैरिंगोट्रैकियल ग्रूव ऐसा जाके यहाँ पे फिर लंग बर्ड्स डेवलप होता है. ओके, so there was a groove over here. You are looking from inside. This groove has progressed like this and then has divided. The lung development happens in 4 phases. The phase number 1 2 3 start. असं करायचं, फक्त बंद करायला, फक्त असं करायचं मला चालू करता. So the phase number 1 is the from week 4 to week 17, and that is called as pseudoglandular phase. Now you need to understand that week in development, week 3 to week 8 is the period of organogenesis. All the organs in the body are formed between week 3 to week 8. And therefore, during week 3 to week 8, a female should not consume or avoid, she should avoid as much medication as possible. Because organs are getting formed, so she should take care, utmost take care of her health. कि ऐसा जाके बाहर पानी पूरी खाए, भेल खाए, इधर नीचे स्वास्तिक में आके कुछ खा के जाए, ऐसा. मतलब बहुत अच्छा था पानी पूरी, बट इन जनरल आउटसाइड फूड शुड बी अवॉइडेड. बिकॉज आपको कुछ हो गया खा के तो यू कैन टेक मेडिसिन. अ फीमेल हु इज यू नो इन दैट week 3 to week 8, I know of one of my friend जिसका एक आगे का दांत ऐसा पीला था. तो his mother during that period of 3 to 8 weeks had taken tetracycline, yellow color drug, और उसके दांत में वो इंसी हो गया. So then some organs get malformed also. ये तो ठीक है, लाल दांत को, पीला दांत को अपन सफेद कर सकते हैं, you know, but otherwise it is, this period is the most crucial period in pregnancy, week 3 to week 8. And therefore in the week 5 the development of the lung starts, and that is called a pseudoglandular phase. The next is canalicular phase, which is from week 16 to week 25. Now you may say कि अरे ये 17 को खत्म होता है, because lung is a huge organ, so in some areas it is in pseudoglandular phase and in some areas it is in canalicular phase. Okay, then week 24 till birth is the alveolar phase. No, is the terminal sac period. Is the terminal sac period. Terminal sac period, week 24 till birth. Terminal sac period. I'm going to repeat this again. An alveolar phase is from birth till 8 years of age. From birth till 8 years of age. Why this is called a pseudoglandular phase is because, you know, this thing is happening and this further divides. So lung looks like glands in pseudoglandular phase. In canalicular phase, the number of the bronchioles that increase, so the lung looks like filled of canaliculi. Okay, then terminal sac phase and then alveolar phase. Why till 8 years? At birth there are only 50 million alveoli.
50 million alveoli. And then slowly, slowly it becomes 300 million. 300 million. So adults have 300 million. At birth, how many million we have? 50 million. So slowly, slowly it increases, and that happens in the alveolar phase. Okay. So therefore, a child's lung has to be protected. You cannot just keep on having repeated attacks that the lung becomes weak, because lung is still developing till 8 years of age. Okay. That's all. So we are talking about development of the lung. Development of the lung, this is the gut, uppermost part of the foregut. Uppermost part of the foregut, a groove develops in the anterior wall, in the ventral wall. This groove is called as laryngotracheal groove. This groove further goes down as laryngotracheal diverticulum. This diverticulum comes down and divides into two principal bronchi, and two lung buds develop at the end of this. The development of the lung is in 4 phases. First is pseudoglandular phase from week 5 to week 17. Canalicular phase from week 16, because lung is a huge organ. So some areas this phase is over, and it's at 16th week this starts till 25. Pseudoglandular phase is like this, where the lung looks like a gland. Canalicular phase is number of bronchioles formed increase. Alveolar phase is terminal sac period is from week 24 to birth. So now in front of this all canaliculi, the alveolar sacs will develop. While there is a phase called as alveolar phase, the 4th phase, which is from birth till 8 years, because at birth there are only 50 million alveoli, which increase to 300 million. So the development of the lung continues after birth till age of 50. Thank you. इसके बाद किसका लेक्चर? हाँ, उसके बाद मेरा वापस ओके, आप ये सेटअप करो ना, पेरिकार्डियम रहेगा. हाँ, so yesterday again I told you about the day before when we discussed the lung, that this is the original intraembryonic coelom, which gets divided into pericardial cavity, you remember, peritoneal cavity, and pericardio-peritoneal canals. Pericardio-peritoneal canals, and this gets by pleuropericardial membranes. This gets closed by pleuropericardial membranes. So this side there is planktopleuric mesodome, this side is somatopleuric mesodome, and the lung buds, they enter here. Okay. So from the intraembryonic coelom, the pericardial cavity, peritoneal cavity, pleural cavity. Pleural cavity develops from pericardio-peritoneal canals. What about the development of the pericardium? And there septum transversum is involved. Septum transversum is involved. Septum transversum and things derived from septum transversum, I draw this diagram. This is not, septum transversum is horizontal only, but some things develop above it from septum transversum and some things develop below it. From the horizontal part develops the central tendon of diaphragm.
Central tendon of diaphragm. Okay, so now you know diaphragm already. You know two sources for development of diaphragm. One is pleuroperitoneal membranes and another is central tendon of diaphragm. Central tendon and pleuroperitoneal membrane form the posterior lateral part. So there is a herniation on the posterior lateral part, means pleuroperitoneal membrane has not developed. Not developed. From the part above the diaphragm, the septum transversum forms the fibrous pericardium. Fibrous pericardium. Fibrous pericardium. And part below the diaphragm, it forms the Glissen's capsule of the liver. Glissen's capsule of the liver. Of the liver. So three things are developed from septum transversum. One, central tendon of diaphragm. Two, fibrous pericardium. And three, Glissen's capsule. That is the capsule, basically capsule of the liver. Okay. Now we move on to understand, because unless you understand some basic embryology of the heart, you will not understand the anatomy of the heart. So I wanted to teach you the interior of the heart, but for understanding the interior of the heart, you need to understand the embryology also. There are two heart tubes. There are two heart tubes in the cranial part near the septum transversum. Two heart tubes. Okay? So, staying together, two heart tubes, फिर उनको प्रेम हो जाता है. मैंने प्यार किया कितने लोगों ने देखा? जरा ऊपर हाथ करो ना बहुत. मैंने प्यार किया कितने लोगों ने किया है नहीं पूछ रहा हूँ, देखा है पूछ रहा हूँ. इतने. उसका एक फेमस डायलॉग है, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. बिकॉज हमारा जनरेशन ऐसा था, लोग लड़की से बात भी नहीं करते थे. गलती से मैंने कॉलेज में एक लड़की से बात किया तो पूरे शहर में ये फैल गया था कि कुछ तो है. तो इतना ये था एटमॉस्फेयर. फिर ये लोग अभी साथ में रहने लगते हैं. फिर नाउ द टू हार्ट ट्यूब्स यूनाइट. The two heart tubes unite, form a single heart tube, which develops four swellings in it. The lowermost swelling is called as sinus venosus. Sinus venosus. Okay? Sinus venosus. The next is common atrial chamber. Common atrial chamber. Sinus venosus, common atrial chamber. Okay? भले सेकेंड टर्मिनल में नहीं आएगा, बट ओके, ये प्रीलिम में आने वाला है, यूनिवर्सिटी में आने वाला है. कवरेज एरिया के बाहर मत जाओ. कॉमन वेंट्रिकुलर चेंबर. कॉमन वेंट्रिकुलर चेंबर काय वरती कसं काय? हां, सांगतो ना तुला. कॉमन एट्रियल चेंबर, कॉमन वेंट्रिकुलर चेंबर, बल्बस कॉर्डिस. बल्बस कॉर्डिस. ओके, जिसके दो पार्ट होते हैं. नीचे को इसको कोनस बोलते हैं और ऊपर के इसको बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस. ट्रंकस आर्टेरियोसस. सो आपको एक चीज समझा कि ऊपर आर्टेरियल एंड है और नीचे वीनस एंड है. ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो मैंने ऊपर लिखा ना, ट्रंकस आर्टेरियोसिस, यहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा सारे आर्टरीज डेवलप होंगे.
मतलब यहाँ से वेंट्रिकल डेवलप होगा, ये दोनों से, बल्बस कॉर्डिस से। ये एट्रियल चेंबर है, साइनस वेनोसिस, मतलब साइनस वेनोसिस विल कंट्रीब्यूट टू एट्रिया, बल्बस कॉर्डिस विल कंट्रीब्यूट टू वेंट्रिकल्स। ओके, यहाँ पे 3 प्रकार की वेन्स आते हैं। एक वेन है वाइटेलाइन वेन, वाइटेलाइन वेन, विटेलाइन, VITLINE, विटेलाइन वेन। अम्बिलिकल वेन, अभी से आपको बता देता हूँ, विटेलाइन वेन विल फॉर्म वेन्स ड्रेनिंग द GI ट्रैक्ट, मतलब पोर्टल वेन वगैरह। Umbilical vein will go to the umbilicus and get fresh blood. And cardinal veins, cardinal veins will form the veins of the body wall, veins of the body wall, veins of the body wall. Vitelline vein, umbilical vein, cardinal vein. Vitelline is concerned with, so portal vein वगैरह ये विटेलाइन वेन से फॉर्म होगा। Now I am drawing for you a table. Where we are going to discuss the 4 chambers of the heart: right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. When you will see the interior of the heart, each of these chambers, they have a smooth part and they have a rough part, smooth part and rough part. They have a smooth part and they have a rough part. पुराने रास्ते कैसे रहते हैं? बॉम्बे के लोगों को नहीं पूछने का मेरे को, गांव के लोग, आपके गांव में कोई पुराना रास्ता है? कैसा रहता है? खड़बड़ित, खरखरित, रफ। सो द रफ पार्ट्स, सो ये चेंबर्स के दूसरे नाम है प्रिमिटिव वेंट्रिकुलर चेंबर, प्रिमिटिव एट्रियल चेंबर। सो द रफ पार्ट ऑफ ऑल दिस primitive atrial chamber, primitive atrial chamber, primitive ventricular chamber, primitive ventricular chamber. So ये जो हमारा common ventricular chamber है उसको primitive ventricular chamber बोलते हैं। That will contribute to formation of rough parts. अभी rough part का anatomy मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। Right now understand. Rough part is always the inflowing part because उसमें सीधा ब्लड ऐसे ऊपर से नीचे आता है, तो उसको स्पीड स्लो करना है आपको, स्पीड ब्रेकर। सो रफ पार्ट रहता है, इसके लिए रफ पार्ट रहता है। आउटफ्लोइंग पार्ट्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर ऑलवेज स्मूथ। आउटफ्लोइंग बिकॉज वहां से आपको भेजना है ना, वेंट्रिकल ने ब्लड भेजा तो स्मूथली बाहर जाना चाहिए। सो आउटफ्लोइंग पार्ट्स आर स्मूथ विच आर फॉर्म्ड इन द वेंट्रिकल्स बाय बल्बस कॉर्डिस, बाय बल्बस कॉर्डिस, बाय बल्बस cordis, bulbous cordis. Okay, bulbous cordis. Smooth part of the right atrium, तो ये साइनस वेनोसिस है ना, ये राइट में एब्सॉर्ब हो जाता है, इज फॉर्म बाय
साइनस वेनोसिस। अभी तक सब ठीक चल रहा था, बराबर है कि रफ पार्ट इज फॉर्म बाय द प्रिमिटिव और कॉमन एट्रियल चेंबर, कॉमन वेंट्रिकुलर चेंबर, इसका बल्बस कॉर्डिस है दोनों का, इसका साइनस वेनोसिस। ओनली डिफरेंस इज इन द स्मूथ पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। उसमें क्या होता है ना कि ये लेफ्ट एट्रियम है, ऐसे लेफ्ट एट्रियम, उसके ऊपर एक पल्मोनरी वेन होती है, वो ऐसे दो में डिवाइड होती है और वो और दो में डिवाइड होती है। बट एट द एंड क्या होता है कि देर आर 4 पल्मोनरी वेन्स ओपनिंग, तो इतना सा जो पार्ट है ये एब्सॉर्ब हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में, एंड देन वी हैव, सो ये पार्ट एब्सॉर्ब हो गया, ये पार्ट एब्सॉर्ब हो गया, तो 1 2 3 4 ओपनिंग सेपरेटली इन द लेफ्ट एट्रियम। सो this part of the pulmonary veins forms the smooth part. So when it comes to the smooth part of the left atrium, I say absorbed pulmonary veins, absorbed pulmonary veins, absorbed pulmonary veins। आज का डिसेक्शन क्या था राहुल? आगे का क्या, आज का डिसेक्शन क्या है? बैक, तो सब मसल्स है बैक। ओके, so 2 heart tubes unite to form 4 swellings: sinus venosus, common or primitive atrial chamber, primitive ventricular chamber, and bulbus cordis. This is the table describing the development of the various chambers of heart. Right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Each of them have a smooth part, rough part. Normally, inflowing part is rough, outflowing part is smooth. Rough roads are primitive, so you remember this. So rough part of right atrium will be formed by primitive atrial chamber, primitive atrial chamber for left atrium. Rough part of both the ventricles will be formed by primitive ventricular chamber. Smooth part of both the ventricles is formed by bulbus cordis. Smooth part of the right atrium is formed by sinus venosus, and smooth part of the left atrium is formed by the absorbed pulmonary veins. The pulmonary veins get absorbed. Okay, thank you. Coming to the last 2 concepts in development of the heart. हमने बोला प्रिमिटिव एट्रियल चेंबर है, प्रिमिटिव वेंट्रिकुलर चेंबर है, but there are 2 atria and 2 ventricles. So how does this happen? Now this is the common atrial chamber and these are the endocardial cushions in the heart. AV cushions बोलते हैं उसको, AV cushions. AV cushions हार्ट के अंदर कहाँ से आते हैं? From the neural crest cells. Neural crest cells derivatives आपने पढ़े जनरल एम्ब्रियो में। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हार्ट में जाके कुछ कुछ जगह पे ऐसे कुशन्स फॉर्म करते हैं, एवी कुशन्स बोलते हैं उसको। इसके लिए अगर कोई बच्चा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ जन्म हुआ तो हम लोग इमीडिएटली हार्ट चेक करते हैं, बिकॉज अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है तो देयर मस्ट बी एसोसिएटेड कार्डियक डेफिसिट, बिकॉज द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ हार्ट ऑल्सो। सो ऊपर से एक सेप्टम आता है, प्राइमरी सेप्टम, सो कॉल्ड एज सेप्टम प्राइमम, और वो नीचे तक अभी तक गया नहीं है, इसके लिए नीचे के फोरामेन को बोलते हैं फोरामेन प्राइमम, सेप्टम प्राइमम
और एवी कुशन, और उसके लोग नीचे के एंड में फोरामेन प्राइमम. Now what happens is the septum primum, it gets detached from here and gets attached here to the AV cushions. तो फोरामेन प्राइमम विल वैनिश और ऊपर एक फोरामेन आएगा, उसका नाम है फोरामेन सेकेंडम. समझे क्या हो गया? सेकेंडरी फोरामेन. ऐसा इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं. प्राइमम सेकेंडम, नो, प्राइमरी को प्राइमम. अब ये सब वेस्टर्न लोगों ने किया है, हमारे भारतीय लोगों ने नहीं किया है. तो प्राथमिक फोरामेन ऐसा अपना हो जाता था. अभी नहीं है अपने को. और प्राइमरी लिखो ना, बट स्टाइल है ना, वेस्टर्न पीपल मतलब स्टाइल. सो प्राइमम, फिर सेकेंडम. तो लोग डर जाते हैं. इट इज लाइक साउथ इंडियन पीपल सेइंग प्रसादम. हाँ, तो फिर टेंशन नहीं लेने का. वही है ना, वही प्रसाद ही है ना, तो दम क्यों? प्राइमम सेकेंडम. वस्त्रम, ओके. सो ये सेकेंडम था. सो नाउ डेवलप्स फोरामेन सेकेंडम को बुझाने के लिए डेवलप्स अ थिक फोरामेन, थिक सेप्टम which is called as septum. क्या नाम दोगे उसको? सेकेंडम. साउथ इंडियन आदमी ने लिखा था, सॉरी वेस्टर्न नहीं. साउथ इंडियन पर्सन हैज रिटन, वी हैव डन दिस नोमेनक्लेचर. सेकेंडम, सेकेंडरी बोलना था उसको. प्रसादम, सेकेंडम, फोरामेन प्राइमम, फिर सेप्टम सेकेंडम. अभी ये सब मैनेजमेंट क्यों? तो इसके बीच में जो ये फोरामेन है ना, ये जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एज फोरामेन ओवल. फोरामेन ओवल. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. हमारे बर्थ के टाइम, अभी इधर नीचे देयर इज द वेंट्रिकल. वेंट्रिकल से लंग को ब्लड जा रहा है, बराबर है कि नहीं? लंग में से वापस आ रहा है. तो हमारा बॉडी क्या सोचते हैं? लंग को काय को भेजने का ब्लड, जबकि ब्रीदिंग ही नहीं कर रहे हैं. ब्रीदिंग ही नहीं कर रहे हैं तो क्यों भेजने का ना उसके पास ऑक्सीजनेशन को. तो देयरफॉर द ब्लड गोज फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम. ये फोरामेन में से आगे ब्लड जाता है. जैसे ही जन्म होता है हमारा, हम पहली सांस लेते हैं, लेफ्ट साइड का प्रेशर बढ़ता है, एंड दिस प्राइमम गेट्स स्टक टू सेकेंडम. प्राइमम गेट्स स्टक टू सेकेंडम. So when you will actually see in the heart, you will see in the interatrial septum, you will see two things. You will see a very very thin fossa. Actually ये पहले डिस्कवर हुआ. ऐसे एक फोसा, उसको नाम दिया था फोसा ओवेलिस. और ऊपर एक थिक सेप्टम था जो कि एक्चुअली सेप्टम सेकेंडम है, और उसका लोअर मार्जिन को वो नाम देते थे उन्होंने एन्युलस फोसा ओवेलिस. उनको पता ही नहीं था कि ये ऐसा थिक सेकेंडम है और ये प्राइमम उसको जाके चिपका है. और सेकेंडम का नीचे का ना हाफ मून शेप्ड है, हाफ मून शेप्ड. ओके. और एक आपको चांद देखने के लिए बॉडी में, अभी आपको सिखा दिया मैंने. इट्स क्रेसेंट शेप्ड, क्रेसेंट शेप. तो उनको क्या लगा ये फोरामेन ओवल का ऊपर का बाउंड्री है, इसके लिए उन्होंने उसको नाम क्या दिया? एन्युलस फोसा ओवेलिस. So they used to describe interatrial septum as two parts, fossa ovalis
and annulus fossa ovalis. बाद में समझा कि फोसा ओवेलिस इज नथिंग बट सेप्टम प्राइमम. What is fossa ovalis? Aura. What is fossa ovalis? Septum primum. And what is annulus fossa ovalis, beta? It is the lower margin of the thick septum secundum. Okay. Lower margin of septum secundum. Okay. तो ये दोनों चीजें दिखते हैं आपको, एक्चुअली आपको फील भी होगा. So this is the development of the interatrial septum. This is the common atrial chamber. This is the AV cushions which are between the atria and ventricle. They are formed from the neural crest cells. So any neurological anomaly, you have to check whether there is cardiac anomaly, because this part of the heart, the AV cushions in the heart, develop from neural crest cells. So neural anatomy, many times any neurological, embryological disorder in the nervous system is associated with a cardiac anomaly, because these AV cushions are developed from neural crest cells. So this is the common atrial chamber. This is the AV cushion developed from neural crest cells. Firstly, a septum primum develops from above. Now there is a gap between AV cushions and septum primum. This forms foramen primum. The septum primum falls down, fuses with the AV cushion, and now there is a foramen created above, which is called as foramen secundum. What happens now is another septum which is thicker than primum, called as septum secundum, develops, and so that the foramen secundum is now closed, and now it is called as foramen ovale. In our body, when the heart is developing, the blood goes from right atrium to the left atrium, because there is no point of going most of the blood. Some blood goes to right ventricle also, and some goes to lung also, but lung is not oxygenating the blood, so the whole blood which is going to the lung is diverted from here to here. So that is the purpose of foramen ovale in embryonic life, diverting the blood from going towards the lung and going towards the body. Body develop or isolate, body tends to go to the body. At birth, after we take the first breath, this pressure on the left side increases and this foramen ovale is closed. If it is not closed, it leads to the persistent foramen ovale, a hole in the interatrial septum. हम बोलते हैं ना, हृदय में छेद है. So it can be in the atrium or it can be in the ventricle. Now coming to the last part of today's lecture, this is the ventricle. This is the ventricle. वेंट्रिकल ये जो है ना सारा, ये दो ट्यूब्स होते हैं ना, मैंने यूनाइट हो गए, साइनस वेनोसिस वगैरह बनाया, तो ये साइनस वेनोसिस ऐसे पीछे चला जाता है. ओके, सो ये सब उल्टा पुल्टा होता है, उसमें फोल्डिंग ऑफ द हार्ट ट्यूब होती है. सो दिस इज द वेंट्रिकुलर चैम्बर. ऊपर बल्बस कॉर्डिस रहेगा, बल्बस कॉर्डिस रहेगा. नाउ व्हाट हैपेंस इज फ्रॉम द फ्लोर, अभी ये वेंट्रिकल को भी हमको डिवाइड करना है. फ्रॉम द फ्लोर डेवलप्स मस्कुलर पार्ट, फ्रॉम द फ्लोर डेवलप्स मस्कुलर पार्ट, फ्लोर डेवलप्स मस्कुलर पार्ट, मस्कुलर पार्ट. ओके, फ्रॉम दिस बल्बार, बल्बस कॉर्डिस है ना ऊपर, कम्स बल्बार पार्ट, बल्बार पार्ट, मस्कुलर पार्ट. और बीच का जो पार्ट है ना, अगेन यहाँ पे कुशन्स प्रोलिफरेट होते हैं, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट. Interventricular septum is developed from three things: muscular part coming from the floor, bulbar part coming from above,
and beach wall in between membranous part bridging the gap. So now again here there is a scope for deficit. What is the prone area? Membranous part, not the line. Okay. Now consider a situation जिसमें ये membranous part यहाँ पे develop नहीं होगा या foramen oval does not shut down. What is happening is blood from, now the left side pressure is increased, blood from the left side has started coming to the right side. So oxygenated blood from the left side is mixing with the right side. Any problem? हाँ? Oxygenated blood is mixing with deoxygenated. कुछ issue नहीं ना, body में नहीं जा रहा है deoxygenated. Oxygenated is going here. No. The problem doesn't start at birth. The person is healthy, high LNRT is playing. Now what happens is, this is sending the blood to the lungs. Lungs has a capacity of X. What is happening is this Y is getting added here, extra blood to the lung vasculature. So the lung vasculature develops hypertension, and this is called as pulmonary hypertension. So now what happens is, to compensate, now because there is a hypertension, to compensate against that hypertension, the right ventricle starts pushing hard, और वो exercise करने लगता है, वो जिम में जाता है, right ventricular hypertrophy. Now the right side pressure increases after few years. Right side pressure increases, and now the blood starts flowing from here to here, right to left, and that is a problem because deoxygenated blood is going now from here to here. Same thing is in the interatrial chamber. This phenomenon is called as Eisenmenger. Eisenmenger, where after few years, some age of 30, 35, suddenly a person starts turning blue, and it develops cyanosis because what has happened is right ventricular hypertrophy has happened in response to pulmonary hypertension, in response to excess blood which was going from left to right. Now blood starts flowing from right to left. Who was the famous Indian actress, the most beautiful actress India ever had? Madhubala. She had this during the shooting of the movie Pyar Kiya To Darna Kya. What is the name of that movie, sir? Mughal-e-Azam. So during that Mughal-e-Azam movie, after that she collapsed. She died at a very young age, around 35 to 40 years. Because this is not detected, because बच्चा खेल रहा है. So Eisenmenger, before that, if it is detected, before the pulmonary hypertension sets in, before the right ventricular hypertrophy happens, if this is repaired, the child is safe. Thank you. मालूम पड़ना चाहिए. मैं तो 35 क्रॉस के, मेरे को तो टेंशन नहीं. आप लोग अभी डरो मत ऐसे, सब लोग अभी जाके इकोकार्डियोग्राफी मत करो. But this is the unfortunate part. राहुल, तुम्हारे पास केवल 7 मिनट है. अभी बाकी हाना मैडम और